A very good evening to everyone. We have with us CA Nitin Gupta, Vice Chairman CIRC, CA Ankit Somani, Treasurer CIC, and who is the eminent speaker of today's webinar on audit trail, the responsibilities of an auditor as well as applicability of it. And all the august participants of today's webinar, a very warm welcome to all of you. Friends, we at CIRC are hosting this program as a learning series for our members, as due to the changes proposed by the Central Council, from now onwards, we cannot give you structured CPRs for these webinars which are hosted, but it is a process of learning, and we should go ahead and do more of these webinars as well as physical CP programs along with all of you. Strive not to be of success, but to be of value. The theme of our CIRC this year is value. V for virtue, A for assurance, L for learning, U for updation, and E for excellence. We'll be hosting webinars and working with the branches on this theme with a synergy and make our CIRC region as one of the best among all the regions of ICAI. Friends, any suggestion or any topic on which you want us to hold these seminars or webinars, please feel free to contact me or my team members at CIRC. Today's webinar on audit trail is the topic to update us with a new change that has been introduced by the Ministry of Corporate Affairs. It has become applicable from 1st of April 2023. So what are its applicability and how we as auditors are responsible to report? Is transparency in accounting or not tampering of the accounts is the only goal of the government towards it? That small companies who do accounting entries fortnightly or weekly or monthly, are they liable, or are we any kind of liability we have for reporting the same in our auditor report? A lot of questions are in our mind, but I'm sure that our learned speaker would update us and enable us to give reasonable assurance to the government. And by virtue of this learning, we will attain excellence in our reports. So before moving on to the session, I would like to introduce Speaker CA Ankit Somani. He is presently the treasurer, as I told, of CIRC. He had completed his articleship from Deloitte, and he is a chairman of Indirect Tax Committee, Branch Coordination Committee, Member Grievances Committee of CIRC as of now. He is a member of several committees of CIRC too. He has secured All India rank 4 times, AIR 32 in CA Foundation, AIR 43 in CA Inter, AIR 20 in CS Foundation, and AIR 14 in CS Final. So, and he has been practicing CA, and he has got 3 offices in the state of Rajasthan. He has deliberated more than 650 seminars, including national conferences all across India in 14 of the states. He has been a visiting faculty of Income Tax and GST in Faculty Development Program at Maharshi Dayanand Saraswati University. He has been appointed as course reviewer of CA course curriculum by ICAI. He has been titled as Rajasthan Shri. He also runs a YouTube channel called Professional Adda. So over to Ankit Somani ji for the deliberation. Thank you. Thank you, madam. Thank you for such a nice welcome. Nitin ji, a very good evening to all. Nitin ji, my elder brother. With this, first of all, I would like to convey my heartfelt gratitude and heartfelt thanks to whole team of CIRC for giving me this wonderful opportunity. Am I audible? The screen is not coming properly. You're audible, but the screen is moving. There has been some issue. Yeah, it's fine now. Okay. So I would like to convey my thanks and regards for giving me this wonderful opportunity
to interact with you all on a very pertinent and important topic, which is the need of the hour for all the chartered accountants. I mean, as far as I can think of, every chartered accountant is somehow or the other linked to one or the other companies, be it private limited, be it public limited, or whatnot. And now, from this 1st of April, from this new financial year, MCA has rolled out a new important amendment. क्या बोला गया उसमें, क्या इंपॉर्टेंट बात है, वो तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही. फिर भी कुछ बात जो मुझे बैकग्राउंड से याद आ रही है. By and large, we can visualize, probably Nitin ji and madam would also agree on this front, that nowadays government is having a policy to introduce a change but not implement it at the same moment. And this has been a very regular feature, be it income tax or be it GST or be it corporate law as well. Like, as we all are aware, during tax audit, there was a big time, what you can say, big time shouting or big time huge hue and cry about clause 44 of tax audit, which was inserted in 2018 but was implemented in just previous year. So that is how government is behaving. Similarly, all the GST amendments, just a minute. खान सर, ये पीछे का बैकग्राउंड ऑफ कर दीजिए प्लीज. सर ये आपके उससे पीसी से. Okay. Similar is the case with GST amendments. Like in every budget, they come out with some important changes, but the applicability date or the implementation date is announced later. With the same terms, with the same effect, even this time MCA has come out with such changes. And this important change was brought into law 3 years back. It was previously supposed to be implemented from 1st of April 2021. I am repeating, 1st of April 2021, which was being deferred for 1 year. Basically, it was being supposed to be implemented from 1/4/2022. But now, from this year, again, it is being implemented. तो पहले क्या हुआ, 1/4/2021 से implement होना था, उसको डेफर किया, 1/4/22 लाए, फिर 1/4/22 को अगेन डेफर करा, 1/4/23 लाए. But now, from this 1/4/23, it will be implemented. Just a minute. You can switch off the virtual background which you're using. I think that's creating a problem. Yeah. Yeah, okay? that's fine now. Okay, great. So we are going to discuss everything in detail, but there are some other aspects as well, which you all must be knowing and which you all must be aware of, like some important changes or some important terms with regard to books of accounts, which is covered under section 2 clause 13 of Companies Act. Similarly, one very important concept which is being referred in section 128, like all the books of accounts are to be maintained at registered office. Even some important points with respect to section 128 about the books of accounts to be maintained at registered office. What can be those points? One important point, one important aspect can be that such books of accounts must be maintained in accrual basis. Plus, they must be maintained in double entry basis, double entry concept. They must portray, they must exhibit true and fair view. As we move forward with the session, we'll have lot many queries with regard to small companies. कैसे क्या audit trail small companies में applicable होगा, किस तरीके से हम उसको ensure कर पाएंगे, किस तरीके से हम उसको implement कर पाएंगे, whether it will be cost savvy, and there can be a number of issues as well. So let's start with the session. Is my presentation visible to all?
Not right now. Yeah, it is coming. Okay, great. So one more question is arising, that what accounting bodies are doing. So basically, MCA is very, very clear that from this particular year, this audit trail concept has to be implemented. What can be the possible impact? What can be the important opportunities as far as we chartered accountants are concerned? What can be the important threats, you can say? What can be the challenges? This can also be one of the question. But basically, every new change or every new thing brings out new opportunities. So in the middle of difficulty lies opportunity, and it is a kind of learning curve, you know. जैसे 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 धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, हम अपना नॉलेज बेस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारी प्रैक्टिस का स्कोप भी बढ़ता ही जाएगा. So this can be probably one of the new areas as well for our professional approach, for our professional domain as well. Now, in basic terms, what is an audit trail? क्या ऑडिट ट्रेल के अंदर कवर्ड है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्या ऑडिट ट्रेल लेकर आएगा? तो लेट्स स्टार्ट विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. Audit trail is a sequential record detailing the history and events related to every transaction or ledger entry. आज के पहले भी अकाउंटिंग होती थी, and the history of accounting is of ages. लेकिन अब ये regulatory requirement बन गया है, and even it is considered as one of the best accounting practices. किस तरीके से आप audit trail को implement कर पाएंगे? It will definitely ensure accountability plus transparency in financial and operating activities. It will even help to promote good corporate governance practices. It will definitely build trust and confidence among stakeholders, and that is very, very important for professionals as well and for organization as a whole. Now, as far as we are considering applicability of audit trail, Murari ji, I can see your raised hand, but let me start with some of the important aspects and then we can take some questions from your side, right? Is it okay, madam? Nitin bhai? Questions हम साथ साथ लेते Yes, चल, perfect. है ना? Okay, No, okay. we'll take at the end the Okay, question. okay. Yes. So with regard to applicability of audit trail, this concept is applicable to each and every kind of company, be it private company, public company, government company, small company, OPC, foreign company, Section 8 company, Nidhi company, each and every type of company. This concept is being applicable. Second important aspect, audit trail is not applicable on sole proprietorship, partnership, society and trust. क्यों इनके ऊपर applicable नहीं है? This new concept has been brought in by MCA. देखिए, अगर MCA लाएगा तो वो कंपनीज के लिए लाएगा, LLP के लिए लाएगा, पर क्या ये ऑडिट ट्रेल LLP के लिए एप्लीकेबल है? Please reply on chat box whether audit trail is applicable for LLPs also. Fine. I'm receiving the answers. It is not applicable on LLPs. Very good. See, in the first phase of this implementation, it is being implemented only for companies, not on LLPs. But sooner or later, it will definitely come. Now, to proceed further, we have to think about, or we have to discuss in detail some important definitions. One is Section 2, Clause 12, books and paper or books or paper. It includes books of accounts, deeds, vouchers, writings, documents, minutes, and registers maintained on paper or in electronic form. Is the screen visible? Because I'm receiving a notification. Yeah, visible. Okay, fine. With respect to books of accounts, it includes records maintained in respect of. Now, there are 4 important things in books of accounts. One is
रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जिसको हम कैश बुक भी बोल सकते हैं. अनदर कैन बी जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है, सेल एंड परचेज. Third aspect is assets and liabilities, and fourth important aspect is cost records. Definitely, concept of cost records is not applicable to each and every kind of company, but only to those kind of companies on which cost records are being made applicable under section 148. Proceeding further, if we move towards section 128, now books of accounts etc are to be kept by company. कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, इस सेक्शन 128 के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमने शुरुआत में डिस्कस की थी. क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं सर? पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही मेंटेन होंगी. क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और मेंटेन हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं सर, प्रोवाइडेड यू डू द सेम through board approval and it is properly intimated to ROC as well. दूसरा important aspect section 128 के अंदर ही the books of accounts must portray or must exhibit true and fair view. जैसे मैं स्टार्टिंग के अंदर भी बोल रहा था, it is not saying true and correct, ये हम सभी लोग जानते हैं, true and fair view की बात कर रहे हैं. तीसरा important aspect इसके अंदर मिलेगा, जो books of accounts हैं those must be maintained on accrual basis. और चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. सो लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल वर्बेटिम ऑफ सेक्शन 128. सबसेक्शन 1 says every company shall prepare. Now please mark some important words. Every company, हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है. shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers and financial statements. तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं? सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज कवर्ड एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 और उसके अंदर बेसिकली आपके पास ट्रेडिंग P&L जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जिसको हम बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट. डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं एप्लीकेबल है, वो आपके पास स्मॉल कंपनीज, ओपीसी, डोरमेंट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है या स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट. चौथी इंपॉर्टेंट बात, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर आल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स. ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है, प्लस स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी. तो ये 5 चीजें आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनती हैं. प्रोसीडिंग फर्दर, क्या बोल रहा है सेक्शन 128? Every company shall prepare and keep at its registered office books of accounts and other relevant books and papers and financial statements for every financial year, which give a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of branch, वगैरह वगैरह वगैरह. And such books shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of accounting. अब इसमें एक और जो बात निकल कर आई वो ये आई, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी मे कीप such books of accounts or other relevant papers in electronic mode in such manner as may be prescribed. तो इस सेक्शन 128 के प्रोविजन से ये बात निकल कर आती है that the books of accounts can be maintained in electronic mode also. लेकिन क्या इस अमेंडमेंट के बाद मैनुअल अकाउंटिंग पॉसिबल है? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स. क्या इस अमेंडमेंट के बाद मैनुअल अकाउंटिंग पॉसिबल है? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स. फाइन, मिक्स से आंसर्स आ रहे हैं. टू दिस अंडरस्टैंडिंग आई वाज वेरी मच श्योर कि इसके आंसर थोड़े से मिक्स से ही आएंगे. देखिए, इस अमेंडमेंट के बाद भी मैनुअल अकाउंटिंग पॉसिबल है. एंड with this one very important point is there. जो स्मॉल कंपनीज हैं अगर वो अपनी अकाउंटिंग मैनुअल ही चला रही हैं, उनके लिए ऑडिट ट्रेल फॉलो नहीं भी हुआ तो भी इट इज नॉट अ बिग इशू. मैं बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूं, आई विल रिपीट दिस. मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं जरा देखिए. सी देयर आर प्रैक्टिकली सम कंपनीज व्हिच आर काइंड ऑफ डोरमेंट. मैं ऐसा क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं है कंपनीज में. मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ बैंक चार्जेस हैं, कुछ ऑडिट फीस है, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं जो पूरे साल लग रहे हैं. Otherwise, there are no transaction, there is no sale purchase, there is no expenditure in relation to
एनी अदर ऑपरेशंस अदर देन फिक्स चार्जेस, आप समझ रहे हैं, उन सब कंपनीज के लिए हम ऐसा गाइड कर सकते हैं दैट इंस्टेड ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड अकाउंटिंग एंड दस इंप्लीमेंटिंग ऑडिट ट्रेल बाय डिफॉल्ट, उसकी जगह हम चाहे तो मैनुअल अकाउंटिंग भी इन प्लेस कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस देयर कॉस्ट. जब उस कंपनी में ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो डेफिनेटली वो डायरेक्टर्स भी ये चाहेंगे कि इसकी कॉस्ट हमारे पास कम हो जाए. प्रोसीडिंग फर्दर, जो कंपनी के द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014, इसमें रूल 3 क्या कहता है और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें निकल कर आता है, लेट्स हैव अ लुक. The books of accounts and other relevant books and papers maintained in electronic mode shall remain accessible in India at all times so as to be usable for subsequent reference. Again, I am repeating the words electronic mode. ये बार 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 हमें electronic mode की ही बात करता है. फर्दर अब इसका प्रोविजो क्या बोला गया और इस कारण से ही ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारे लिए आया है. क्या बोल रहा है, लेट्स हैव अ लुक इन डिटेल. Provided that for the financial year commencing on or after 1st day of April 2023, आसान शब्दों में, for every financial year ending till 31st March 2023 उसके लिए applicable नहीं है. Every company which uses accounting software, again ये बात वही कर रहा है, मैनुअल अकाउंटिंग के लिए applicability नहीं है. केवल और केवल एप्लीकेबिलिटी किसके लिए है, फॉर सच कंपनी विच यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर for maintaining its books of accounts shall use only such accounting software which has a feature of recording audit trail. पहली important बात, recording audit trail of each and every transaction. Please have a look. Recording audit trail of each and every transaction, creating an edit log of each change made in books of accounts. 3 बातें हो गई अब तक. पहली बात, ऑडिट ट्रेल की रिकॉर्डिंग होगी, किसने एंट्री करी, कब एंट्री करी, कौन सी डेट को एंट्री करी, क्या बुक्स, क्या अकाउंट्स उसमें इफेक्ट हुए, क्या अमाउंट्स थे, ये तो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होंगे, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के. Creating an edit log of each change made in books of accounts along with date when such changes were made and ensuring that the audit trail cannot be disabled. Now this third aspect, ultimately chartered accountants will have to take management representation letter, right? Am I audible? I am receiving a message. Hello? Yes, you are audible. Okay, fine. तो हमें ये अल्टीमेटली कि ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं हो सकता है, इसका तो हमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना ही पड़ेगा. प्लस ड्यूरिंग होल ईयर इट हैज बीन enabled anyhow for every transaction. इसका भी अल्टीमेटली हमें मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना ही पड़ेगा, लेना भी चाहिए. लेकिन क्या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेने से हमारी ये प्रॉब्लम, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी अकाउंटेबिलिटी हम शिफ्ट कर पाएंगे? नहीं. दिस हैज टू बी चेक्ड एट योर एंड एज वेल कि ये ऑडिट ट्रेल वाकई है कि नहीं, ये एडिट लॉग हर वक्त मेंटेन हो रहा है कि नहीं फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. प्रोसीडिंग फर्दर, व्हाट इज एडिट लॉग, क्या है, कैसे है, जरा देखिए. कौन एंट्री कर रहा है, कब एंट्री कर रहा है, क्या अकाउंट्स उसमें इफेक्ट हो रहे हैं, क्या अमाउंट्स उसमें आ रहे हैं, ये सब डिटेलिंग होगी. सर ये डिटेलिंग होगी कैसे, कौन एंट्री कर रहा है, कैसे पता पड़ेगा? So now comes one next important aspect. For enabling this audit trail, आपको सबसे पहले अपने अकाउंटेंट्स को, अपने अकाउंटेंट मतलब कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो भी लोग अकाउंटिंग में इन्वॉल्व है उनके यहाँ पर, उनको आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, एक एडमिन आईडी भी अलग रखना पड़ेगा, राइट? उनको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा विच विल मेंटेन अ लॉग. उस लॉगिन आईडी पासवर्ड का लॉग मेंटेन होगा, राइट? एक्चुअल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स मेंटेन होगी, कब किस लॉगिन आईडी से किसने कितनी बजे क्या चीज की एंट्री रिकॉर्ड करी, क्या एंटर होंगी.
Can any entry be deleted now? Now this is again a very important pertinent question. क्या अब कोई एंट्री डिलीट हो सकती है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स. क्या अब कोई एंट्री डिलीट हो सकती है? अगेन इट इज रिजल्टिंग इन मिक्स आंसर्स. कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो. राइट, आप जरा देखिए मेरी बात समझिए. देखिए एंट्री मॉडिफाई हो सकती है, रेक्टिफाई हो सकती है, उसमें सब लोग अग्री कर रहे हैं. सर डिलीट हो सकती है, बिल्कुल डिलीट भी हो सकती है, लेकिन उस डिलीटेड का भी एडिट लॉग में एंट्री रहेगी, उसकी डिटेल उसमें रहेंगी, प्रॉपर रीजन भी उसका देखा जाएगा, समझा जाएगा. जब भी ऑडिटर आएगा तब वो डिलीटेड एंट्रीज की बात करेगा, तब वो एडिटेड एंट्रीज की, मॉडिफाइड एंट्रीज की, रेक्टिफाइड एंट्रीज की बात करेगा. राइट, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. सी रिमेंबर दोज डेज ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड, ओल्ड टाइम्स, स्कूल टाइम्स, जब हमें शुरुआत के अंदर स्कूल में जाके सर ने, मैडम ने कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर बेसिक बात ये, अगर कहीं पे भी कटिंग है तो वहां पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस किए गए हैं. राइट, तो वो अब बातें आपके पास इंश्योर करा रहे हैं. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, स्टेप्स किस तरीके से हम एडिट लॉग मेंटेन करेंगे. सबसे पहले आपको एडिट लॉग बटन इनेबल करना है, बी इट टेली, बी इट जोहो, बी इट एनी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. टेली का नाम, जोहो का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़े से वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है, इवन बिजी. ओके, क्रिएट प्रॉपर लॉगिन्स. अगर आपने अपने क्लाइंट्स को ये गाइड नहीं किया है, देन प्लीज गाइड दिस, दैट यू हैव टू क्रिएट प्रॉपर लॉगिन आईडीज फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉई having access to your accounting software, and you have to assign the duties to the accounting staff, because now the edit log will give you details about timing, username, changes, and all these three details are mandatory in edit log feature. If login IDs are not properly created, it would be a serious lapse in internal financial controls. अगर आपके पास ये edit log maintain नहीं है, then this audit trail cannot be implemented. तो नहीं हुआ इंप्लीमेंट तो क्या हो गया, क्या इसके रिपरकशन है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं? सर पहली बात तो मॉनेटरी फाइन भी है. नॉट ओनली मॉनेटरी फाइन, इसमें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें उसको मेंशन करना है, हमें उसको रिपोर्ट करना है. तो ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर देंगे, उसके बाद क्या इंपैक्ट होगा सर? क्या नोट्स अकाउंट से भी आएगा, क्या बोर्ड रिपोर्ट में भी आएगा? चलिए देखते हैं, आगे आता जाएगा, हम डिस्कस करेंगे. Restrict the administrative right, बहुत ध्यान सुनिएगा, restrict the administrative right of enabling or disabling edit log to higher authority in company. अब उस एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के अंदर क्या चीजें कवर होंगी, क्या चीजें कवर नहीं होंगी, जैसे ही आप एडिट लॉग इनेबल करेंगे ये सब चीजें वहां पर आती जाएंगी. And I believe, I strongly hope that login ID password will not be shared among employees. Yes sir, till today also the login ID passwords are being shared at length, even on WhatsApp, even on any platform. और बहुत सारे लोग login ID password अपने कंप्यूटर पर ही, अपने डेस्कटॉप पर ही, अपने लैपटॉप पर ही एक स्लिप पोस्टेड के नाम पर लगाकर छोड़ देते हैं कि ये इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का login ID पासवर्ड है. Now all this is going to create huge problems. कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स की हम बात करें. व्हाट इफ कंपनी हैज मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स फॉर अकाउंटिंग? सी देयर आर सम कंपनीज व्हिच मेंटेन डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर स्टॉक और इन्वेंटरी, सम डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एम्प्लॉय और पेरोल प्रोसेसिंग, यू नो. तो उन सब के जो अकाउंटिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स अगर हैं, क्या उन सबको भी आपको ऑडिट ट्रेल के थ्रू इंप्लीमेंट कराना है? बिकॉज दैट इज ओनली पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. तो क्या उसमें भी आपको ऐसा ऑडिट ट्रेल इंप्लीमेंट करना है? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स. क्या उसमें भी ऑडिट ट्रेल इंप्लीमेंट होना चाहिए हर एक मल्टीपल सॉफ्टवेयर के लिए भी? फाइन फाइन फाइन, अगेन डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. देखिए हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो इंटीग्रेट हो रहा है आपके मेन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, इट शुड हैव ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग फीचर एज वेल. इसका मतलब ये हो गया कि उस मल्टीपल सॉफ्टवेयर, वो जो स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर जो आपने बना रखे हैं, उसमें भी आपके पास एडिट लॉग का फीचर होना जरूरी है. अगर नहीं है तो द फर्स्ट स्टेप इज टू
कॉन्टेक्ट योर सॉफ्टवेयर डेवलपर और ये इंश्योर कराइए कि उसमें भी ऑडिट ट्रेल का फीचर, एडिट लॉग का फीचर इनेबल हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑडिट ट्रेल अगर मेंटेन नहीं होती है तो हाउ मच फाइनेंशियल लॉस कैन बी ऑन कंपनीज। देखिए उस केस के अंदर आपके पास फाइनेंशियल लॉस 50,000 से लेकर 5 लाख तक का है, बिकॉज इट कैन बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ सेक्शन 128। आप समझ रहे हैं, और उस केस के अंदर आपके पास ये फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी। Proceeding further, what if company is not recording the transactions timely? Now this question is need of the hour कि साहब हमारे तो रिकॉर्डिंग डे टू डे बेसिस पर होती नहीं। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्मॉल कॉर्पोरेट्स रिकॉर्डिंग वीकली बेसिस पर या जब भी आपके पास अकाउंटेंट आएंगे उस समय रिकॉर्डिंग होगी, राइट? हो सकता है ट्वाइस अ वीक हो, लेकिन उस मोमेंट पर नहीं हो रही है जिस समय ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अब क्या होगा सर? क्या हम इस ऑडिट ट्रेल के कंसेप्ट के बाद भी डिलेड अकाउंटिंग कर पाएंगे? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। क्या हम डिलेड अकाउंटिंग कर पाएंगे? और क्या डिलेड अकाउंटिंग कर पाना लीगल है? क्या डिलेड अकाउंटिंग कर पाना आपके पास लॉ परमिट कर रहा है? आप समझ रहे हैं? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक कंपनी के अंदर आपके पास हर एक मिडिल लेवल प्रैक्टिशनर्स के लिए आएगा। प्लीज रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। अगर कोई कंपनी टाइमली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर रही है, से फॉर एग्जांपल वंस अ वीक रिकॉर्डिंग हो रही है, तो क्या ये लीगली परमिसिबल है? अब फाइन, जरा बहुत ध्यान से देखिए। डिलेड अकाउंटिंग कहीं भी प्रोहिबिट नहीं कर रखा है, बट एज अ प्रूडेंट इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग शुड बी डन ऑन टाइमली बेसिस। Undue delay accounting of transaction is an indication of fraud risk factor under SA 240. तो इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अगेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इसका पॉइंट लिखना है। नॉट ओनली दैट आपको इसके बारे में आपके क्लाइंट्स को जरूर से बताना है कि अब आपकी अकाउंटिंग डिलेड नहीं हो सकती है। अननेसेसरी दूसरे तरह के कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएंगे। In majority of companies, director's responsibility statement is also applicable under section 134 subsection 5. It is basically a declaration in such DRS by the directors that IFC of the company are effective and it is effective throughout the year. And on that even auditors are required to give a report on IFC. तो उस केस के अंदर again it will create problem अगर कभी भी आपके transactions timely record नहीं हो रहे हैं। As far as if we consider the responsibility of auditor, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, कितनी है? अगर कोई हमारे बार बार समझाने के बाद भी कंपनी फॉलो नहीं करे ऑडिट ट्रेल में, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? एज ऑडिटर हम क्या कर सकते हैं सर? मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको हमारी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। तो क्या इसको अलग से कहीं प्लेस दी गई है, या हमें इसको एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ में लिखना है, अदर मेटा पैराग्राफ में लिखना है, या इसका क्वालिफिकेशन डालना है? तो ऐसे 705 आएगा, ऐसे 701 आएगा, 706 आएगा, क्या कौन सा वाला ऐसे इसमें अप्लाई करेगा? तो जरा बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज कवर्ड अंडर रूल 11 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014, और इसमें रूल 11 अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया। और क्या बोला? लेट्स हैव अ लुक, बहुत ध्यान सुनिएगा। वेदर द कंपनी in respect of financial years commencing on or after 1st April 2022, इसको ऑल्टर करके 2023 कर दिया गया अभी, has used such accounting software for maintaining its books of accounts which has a feature of recording audit trail। बहुत ध्यान सुनिए, क्या उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का एडिट लॉग की फैसिलिटी है? ओके, एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट, क्या वो साल भर तक सारे ट्रांजैक्शंस के लिए रिकॉग्नाइज हुआ है? ये दूसरा पॉइंट। क्या वो ऑडिट ट्रेल का फीचर टेम्पर तो नहीं हुआ है? ये तीसरा पॉइंट। जरा देखिए, एंड द ऑडिट ट्रेल फीचर हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड।
नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने साल तक प्रिजर्व करना है सर? ऑडिट ट्रेल को भी प्रिजर्व करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करना पड़ता है ना? कितने साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, कितने साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करना है? बिल्कुल ठीक बात है, 8 इयर्स आंसर आ रहा है, कुछ लोग 10 साल भी बोल रहे हैं, कुछ इनकम टैक्स का हिसाब से भी बोल रहे हैं। फाइन फाइन फाइन, सी फॉर ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कंपनीज के लिए एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 128 सेज दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी मेंटेन्ड, मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर नेक्स्ट 8 इयर्स. Now going forward, extending the same logic, even the audit trail and the edit log is to be maintained, is to be preserved for next 8 years, right? Okay, proceeding further. अगर ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं हो तो हमें क्या करना है? सर हमें क्वालिफाई करना है, ये तो बात हो गई, ये बात हमने बिल्कुल समझ ली कि हमें इसमें क्वालिफिकेशन डालना है. अभी हमने पिछला में देखा रूल 11G जो आपके पास इंसर्ट हो गया, उसके हिसाब से आपको ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी. अगर वो एस्पेक्ट्स नहीं थे तो वो 4 एस्पेक्ट जो हमने कंसिडर करे थे, राइट? पर क्या इसके बाद ऑडिटर्स रिपोर्ट में डालेंगे हम, तो क्या कंपनीज को भी अपने नोट्स ऑन अकाउंट्स में डालना है? क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट का भी पार्ट बनेगा? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स. क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट का भी पार्ट बनेगा अंडर सेक्शन 134? बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा 100%. सी whenever there is any qualification in auditor's report, please listen very carefully. Whenever there is any qualification in auditor's report, then in board of directors report आपको उसमें उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा. इट इज अ मैंडेट गिवन इन सेक्शन 134. तो आप समझ रहे हैं, अगर आपके ऑडिटर्स रिपोर्ट में इस चीज का क्वालिफिकेशन हुआ है, देन डेफिनेटली आपको इस बारे में बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन करना ही पड़ेगा. एंड एज फार एज स्मॉल कंपनीज आर कंसिडर्ड, सी इन मेनी टाइम्स वी ओनली गाइड द क्लाइंट कि क्या क्या पॉइंट इसमें कवर हो सकते हैं. तो आप ये बात अपने क्लाइंट्स को जरूर बोलिए. सिमिलरली आप नोट्स ऑन अकाउंट्स के अंदर भी इस एस्पेक्ट को लिखिए. नोट्स ऑन अकाउंट्स के अंदर भी इस एस्पेक्ट को आप लिखिए दैट ऑडिट ट्रेल वाज नॉट बीन इंप्लीमेंटेड फॉर होल ऑफ द ईयर. वैसे भी देखिए टुडे इज 14th, राइट? अभी तक हमने प्रॉपरली हमारे क्लाइंट्स को गाइड ही नहीं किया है. सो शुरुआत के 14 दिन तो आपके पास एडिट लॉग इनेबल्ड ही नहीं था. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई सारी कंपनीज में तो आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं है. जहां पर भी लाइसेंस वर्जन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वहां पर तो एडिट लॉग मेंटेन हो ही नहीं सकता. तो अगेन दैट इज एन एस्पेक्ट, राइट? तो ये सब बातें भी समझने लायक है. क्या हमें इसका नोट डालना है नोट्स ऑन अकाउंट्स में? डेफिनेटली यस. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या हमें इसका नोट बोर्ड रिपोर्ट में डालना है? अगेन डेफिनेटली यस. ओके, कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में, वो हम कंसिडर करेंगे सर. जस्ट गिव मी अनदर 5-10 मिनट्स, उसके बाद हम आपके सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे. इसमें से कुछ पॉइंट्स तो ऑलरेडी भी मेरे स्लाइड में हैं, कुछ टैली रिलेटेड मिसलेनियस पॉइंट्स. ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं सर जो मेरे बनाए हुए नहीं है, ये किसी ना किसी टैली एक्सपर्ट ने मुझे बताए. अगर तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे. क्या ये टैली ईआरपी 9 में ऑपरेट कर पाएगा? क्या ये एस्पेक्ट, क्या ये कंसेप्ट ऑडिट ट्रेल का, एडिट लॉग का, क्या टैली ईआरपी 9 में ऑपरेट कर पाएगा? सर टैली एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि इट विल ऑपरेट ओनली विद टैली प्राइम विद एडिट लॉग. ये टैली ईआरपी 9 में ऑपरेट नहीं करेगा, टैली प्राइम में करेगा, दैट टू टैली प्राइम विद एडिट लॉग वर्जन. ठीक है, ओके. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड इन सेम टैली? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब सपोज कोई अकाउंटेंट है, उनके पास एक ही टैली है,
उसी टैली पर वो कंपनी की भी, प्राइवेट लिमिटेड की भी, पब्लिक लिमिटेड की भी, पार्टनरशिप की भी, प्रोप्राइटरशिप की भी, सभी की अकाउंटिंग उसी टैली पर करते हैं। तो क्या वो इनेबल करने में हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा? क्या वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो फिर इसका इलाज क्या है? सर, या तो हर एक के लिए सेपरेट टॉगल बटन हो, या फिर आपको एक पुराना टैली भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इवन ट्रस्ट, सोसाइटी, एचयूएफ वगैरह जो भी हैं, जो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए अभी तक ऑडिट ट्रेल नहीं आया है, इवन एलएलपी के लिए नहीं आया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, वेदर इट विल इंपैक्ट इवन प्रीवियस ईयर्स। हम आज इंप्लीमेंट कर तो देंगे, हम आज ये एडिट लॉग इंप्लीमेंट कर तो देंगे, इनेबल कर तो देंगे, लेकिन क्या पिछले साल के अंदर भी वो इंप्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि अभी 31 मार्च 2023 की जो हम ऑडिट अब करेंगे, समझ रहे हैं, 22-23 फाइनेंशियल ईयर की जब हम ऑडिट अब करेंगे, तो क्या वो इंप्लीमेंट हो जाएगा? सर देखिए, इसके ऊपर कुछ मिक्स से आंसर्स हैं, इसके ऊपर कुछ मिक्स से आंसर्स हैं, और उस केस के अंदर व्हाट आई सजेस्ट कि आप उस टैली को ब्रेक कर ले सर। जो पिछले साल की टैली थी वो अलग कर लें, और इस साल की टैली अफ्रेश कर लें, राइट? वैसे आइडियली वो इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। अब जो एंट्रीज होंगी केवल वही रिकॉर्ड होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है हर एक के लिए, हर एक कंपनी के लिए। कई सारी कंपनीज कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी किया करती हैं, राइट? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अनसेड हैं पर हो रही हैं। दिस माइट नॉट बी द राइट प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट फूड फॉर थॉट। What will happen to these kind of transactions? जरा हम देखें, नेगेटिव कैश बैलेंस इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सी, कई बार हमारे नॉलेज में ऐसा आता जरूर है कि बीच में कहीं कैश नेगेटिव हो गया, तो उस केस में हमें अकाउंटेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं सर, यहाँ पर एक कैश सेल थी वो रिकॉर्ड करने से रह गई, वगैरह वगैरह, कुछ कैश रिसीट्स रिकॉर्ड होने से रह गया, अब वो बैकडेट में रिकॉर्डिंग होगी, तो क्या उसकी एडिट लॉग में एंट्री होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कुछ, राइट? कुछ कैश एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं ईयर एंड के बाद टू एडजस्ट द प्रॉफिट्स। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो प्लीज this slide or this point to be explained to each and every client also. Some clients even pass backdated entries after year end to adjust the profits. Cancellation of vouchers at the year end to increase or reduce, either reduction of income or reduction of expenditure, you know. Splitting the cash payments to avoid disallowances under income tax act. ये भी हम सभी लोग जानते हैं, आपके पास सेक्शन 48(3) के अकॉर्डिंग में 10,000 से ज्यादा बड़ा जो कैश पेमेंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा। और एक और बात जो एप्लीकेबल हर एक कंपनी के लिए ही है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये सब ट्रांजैक्शंस, ये सब एडजस्टमेंट्स वो करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ओपनिंग एंट्री सर हर एक साल कभी भी जब भी कभी ऐसा होता है तो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल हम बिगिन करते हैं, ओपन अप करते हैं, इस साल हम ओपनिंग एंट्री के थ्रू लाते हैं। पर क्या 31 मार्च 2023 के ट्रांजैक्शंस, क्या 31 मार्च 2023 के बैलेंसेस फ्रीज हो चुके हैं? क्या 31 मार्च 2023 में आप कोई एडजस्टमेंट एंट्रीज आपके पास पेंडिंग नहीं है? क्या आपने डेफर्ड टैक्स के एडजस्टमेंट, क्या आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के एडजस्टमेंट, क्या आपने एक्सपेंडिचर्स के एडजस्टमेंट, क्या आपने ऑडिट फीस के एडजस्टमेंट्स, क्या आपने सारे आउटस्टैंडिंग रिकॉग्नाइज कर लिए हैं? नहीं सर, ये नहीं हो पाएगा, अभी तक तो ये नहीं हुआ है, राइट? और इस कारण से बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर, बहुत सारे इश्यूज के अंदर, और ये ओपनिंग एंट्री के बैलेंसेस चेंज होंगे ही होंगे। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो ये कुछ फूड फॉर थॉट भी थे, ये हमारे लिए नए एरियाज ऑफ प्रैक्टिस भी लेकर आए हैं। हमें देखना पड़ेगा क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारे वीकनेसेस हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमारे पास इस ऑडिट ट्रेल के थ्रू थ्रेट डेवलप हो रहे हैं, राइट? विद दिस आई गिव अ रेस्ट टू माय वॉइस। आपके क्वेश्चंस मैं एक एक करके ले लेता हूं। I'll go through the questions. Yeah, please. The first question is, what are the best software at affordable cost for audit trail for SME companies?
So this is very kind of a questions. It can vary according to people. So if you can suggest any kind of software that is for applicable at affordable cost. I believe majority of the companies today are using tele software. तो शायद टेली सॉफ्टवेयर के अंदर उनको कंटिन्यू करना थोड़ा सा आसान रहेगा. Not only it is relating to cost, but it is also in relation to convenience as well. See, I am not hereby, giving an advertisement for tele, but still कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपको कन्वीनियंट लगता हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, उसके थ्रू हम कर सकते हैं. Okay, and in small companies, many a time during the course of audit, auditor comes across that there's a mistake in passing entries, and at that time entries are either modified, deleted, or added. However, due to this audit trail, there will be a problem. So what can Yes, be done sir. about it? Definitely true, Ajit ji. This is main issue, and this is happening in reality also. And that's what my last slide was hinting. कि ये सब जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, कैसे इनको हम इंश्योर करेंगे. तो ये सारी बातें आप अपने क्लाइंट्स को जरूर शुरू से ही बताएं. एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर. और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है सर. ये हमारे लिए आपको इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख सकते हैं. कैसे अपन इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप जरा समझिए. इंस्टेड ऑफ कि हम ऑडिटिंग साल खत्म होने के बाद करेंगे, लेट्स ब्रिंग दिस ऑडिटिंग as a routine at the end of every month, or at least at the end of every quarter. And this is how really we can generate value addition in the eyes of company as well, in the eyes of corporates as well, and it will enhance our audit fees as well. So basically it is coming with opportunity also, professional opportunity develop ho rahi sir. One question is Rule 3.2 says unaltered, which means no deletions. So what does it mean? If we can delete entries, so what does this rule say? अनऑल्टर्ड जैसी बात तो उसमें नहीं लिखी हुई है, लेकिन हाँ फिर भी अगर हम उस एस्पेक्ट को समझें अनऑल्टर्ड, तो आप अगर कोई एंट्री डिलीट करते हैं, इवन दैट डिलीटेड एंट्री विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू दैट एडिट लॉग कि कौन सी एंट्री यहाँ पर किस लॉगिन आईडी से डिलीट हो गई है, कौन से दिन वो डिलीट की गई थी. सी ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सी वंस यू आर एबल टू नो that this entry or this amount or this account has been changed or this entry has been deleted, and at what point of time it has been deleted, it will give you a picture that this is being done for an adjustment, and this adjustment was done at later on stage after the recording was done, right? So this is very important. Audit trail is applicable to approved vouchers or audit took place before approval as well. Somewhere like maker checker concept is there, then how to go about it? The audit trail will be applicable after that. Or see, to my understanding, in majority of the cases, this maker checker concept is applicable at the time of creation of vouchers. ये कैश वाउचर हुआ, हमने एक्सपेंडिचर डाला, अप्रूवल के लिए गया, अप्रूव हुआ, अगेन सील लगी, देन कैश इज हैंडेड ओवर, राइट? Similarly, if we follow the same concept in accounting, that there is one person who is making the entries and there is another person, some head accountant who is checking the entries, say at the end of every week or every fortnight or every month, then there would be some changes, and yes, he will definitely have some important aspect plus some edit log plus some important notings that why this change was necessary. देखिए ऐसा है, एंट्री डिलीट हो रही है, एंट्री मॉडिफाई हो रही है, एंट्री चेंज हो रही है, इसका एडिट लॉग में रिकॉर्डिंग तो हो रही है, उसके नुकसान ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इट हैज टू बी सीन फ्रॉम पॉजिटिव एस्पेक्ट एज वेल कि अब आपके पास कोई भी अगर कोई चेंज होता है तो उसका एडिट लॉग होने से कम फ्रॉड्स तो कम होंगे. दिस इज एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट एज वेल. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया, आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ऐसा सोचिए, ये बेसिकली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. एंड इफ दिस एडिट लॉग और इफ दिस ऑडिट ट्रेल इज नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड, देन वी हैव टू जस्ट रिपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट.
Okay. Then there is a question by which, sir, is it applicable for this year onwards, for which audit is happening in next year, or the audit report which we are going to prepare for 2022-23? I think it is applicable for financial year 23-24 onwards. Yeah. For any kind of financial year beginning on or after 1st April 2023. Okay. Then can we keep manual accounts till audit trail is enabled during this year? Perfectly true. So is there any kind of rule that a company having turnover less than 1 crore cannot keep manual accounts, something like that? Nothing of that sort. Nothing of that sort. Okay. It is on your this thing. Then board report prepared by company, that if company does not report, in that case, what is our responsibility? It is not at all our responsibility. Again, the onus or the burden of the same is on board of directors only. But majority of the times, it is our basic prerogative that we should guide our client at least. While giving a report in the middle of the year, do we need to see the audit trail? Yes, if we are issuing any quarterly audit reports, then we must report on this. I think some people have raised their hands. So I'll just unmute them and allow them to talk, okay? Sure. Suresh Ramchandani, you can ask your question. Unmute yourself and ask your question. Suresh Ramchandani, are you able to hear me? I think he is not. Probably he is unable to unmute himself. No. I have just asked him to unmute himself, but he's hiding. Has he given any message like he's not able to unmute himself? No, I don't think so. No. So then there is another Abhishek Sharma ji. Abhishek Sharma ji, you can ask your question by unmuting yourself. Abhishek ji, are you there? Please ask the question. Are you not able to speak? No, there is no option to unmute, but when we allow, then the participant can come and unmute themselves or remove their, even start their video and ask the question. So we have allowed this for Abhishek ji, but I think he's also unmuted, but still he's not asking the question. Then there is this Shinshipa Agarwal ji. Yeah, hi ma'am. Yeah, hi. You can ask the question, Shinshipa. Sure. Hi, sir. Yeah. Sir, I am coming from a management side. Like I work for a man from the perspective of a management in a private limited company. My question is regarding that, what are the challenges currently the companies are facing in implementing it? Madam, I referred every challenge in my last slide also, no? That some companies want to adjust some profits after year end. Right. Then some adjustment entries are to be passed after year end. Then some entries are to be deleted. All these are practical challenges only in a small business houses. So for taking care of this, for catering those needs, the best part what I can suggest is to go for quarterly audits. That can be the best option possible, so that the profits can be known to management after every quarter at least. Okay. So with respect to like it's software, from perspective of a software, if I ask.
Like with regard to from a software, management. Correct. okay. See, Correct. with regard to software, if we are considering, then they are having difficulty in creation of login IDs and assigning the roles and responsibilities, like what part of accounting is to be done by whom. And suppose Right. if even if that part is being taken care of, the next important aspect, that who is going to check those entries, maker checker concept. Then third important aspect, in this accounting software only, in case any organization is maintaining multiple softwares which is linked to accounting, then those accounting software, small softwares, be it of inventory software, or be it payroll, or be it some important any other software, then even those softwares must be having audit trail. लेकिन उसमें ऐसा कोई relevant चीज हम inbuilt लेते नहीं है, because those are always tailor made and customized softwares. Okay. Okay. So like the changes in the software has to be done within the IT team of the organization, right? Yes, perfectly true. But the such IT team has to be guided well. Correct. That's the role of a finance will come across. Yeah. What are the So requirements? if we go and visualize this from us from a corporate which is slightly bigger than a small company, Right. then in that case there is a big time opportunity for all the professionals to guide each and every company, or to guide each and every IT handling team कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर इंपॉर्टेंट चेंज होना जरूरी है, अभी ये नहीं हो रहा है, इट विल क्रिएट इश्यूज एट द टाइम ऑफ ऑडिट, वगैरह वगैरह वगैरह. Okay. So my last question with this respect, it's already April now, so like it will take consequent time to get properly implemented, maybe in couple of months. Would it impact the audit for this financial year? Like if not implemented for the first 2 to 3 months, will it impact the audit report? To my understanding, definitely yes, and these are kind of teething issues. Likewise, whenever there is an important change cropping in, always there are some teething issues, ना? And आप ऐसा बोल रहे हैं, ये तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये पहली बार आया है, अदरवाइज तो ये 2 साल से आया हुआ है. Okay. It is just that MCA did not remind us during the whole last previous year that it will be implemented from 1st of April 2023. So we were not mentally prepared. Just like it was being deferred in previous 2 times, we were thinking that it will be deferred this time also. Correct. Thank you, Shrishma. There are other people also to ask questions. Sure. Thank you so much. Thank you so much. Ravindra ji, you can unmute yourself and ask a question. Sure, ma'am. Thank you. So my question pertains to audit report for financial year 22-23. Rule 11G, which talks about other matters. So it says that whether the company in respect of financial year commencing on or after 1st April 2. So they have to report whether audit trail and rest of the thing has been implemented. Now this rule, as per the earlier notification of MCA, which extension was given for only Rule 3, wherein the company was required to maintain the software like the audit trail. But this rule 11G was never extended from 1st April 22 to 23. So in this report, what auditor will report for this year? Very true, sir. Very true. Basically, this is a problem, and I believe that MCA will definitely come out with some of the practical solution. Likewise, if the companies were not even required to maintain this edit log or to maintain such kind of audit trail, then how can there be a responsibility on the part of auditor to report on the same? So I think there would be some clarification on the same, and likewise, silently also, I mentioned this in my session. There was a place, where I was discussing Rule 11 of Companies Audit and Auditors Rules 2014, and the date was mentioned as 31st March 2022, 1st of April 2022. Correct. Yeah. Very true. So we expect a clarification. Yeah. I think there would be a clarification. In case there is no clarification, then definitely we have to qualify. Plus, we can add one more point. Then that by the virtue of amendment in Rule 3
of company accounts rules, there was no need for maintaining such audit trail. Okay. So it cannot be so much harsh on this, at least in financial year 2023. Okay. Thank Thank you, you, Ravindra sir. ji. Thank you. Neeraj ji, you can unmute yourself and ask the question. Yeah, hi sir. A question, like many organizations have multiple softwares like CRM or the POS, point of sales, and that is partially integrated or integrated with the accounting software. So because these players, the CRM player or the POS players are not very accustomed to this audit trail and all those things. So how does this kind of situation will work for the auditors, sir? Sir, I think in all such cases, auditor will have to qualify, sir. I tried to touch upon this aspect, sir. So that will be a practical problem, sir. Thank you so much. Definitely. But this is a big issue. This is a big issue in every organization which is slightly bigger than even a small company, because many companies are maintaining at least a software for inventory. Yes, absolutely. Likewise, if you see, this pharma industry, they cannot operate without a software. Correct, sir. The same goes with the retail industry also, sir. Yeah. Wherever, there is huge variety of stocks with a perishable date. वहां पर तो ये इशू आना ही है सर. वहां पे इशू आना ही है सर. और वहां पर भी हर जगह आना है जहां पर भी आपके पास स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप डाउन है. अगेन वहां पर आएगा. करेक्ट. तो इसके सर कोई चांसेस है कि थोड़ा सा लिवरेज मिल जाए 3-6 महीने के लिए? क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता है कि सर कुछ भी हुआ है अक्रॉस द इंडस्ट्री. नीरज जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, लेकिन मतलब रूल इज रूल. Rule is right. ठीक है sir. Thank you so much. Yeah, actually, we all knew that this is going to happen, but we were not prepared for it. We have that last minute kind of a habit to do things. We knew line is coming, but we were ignoring that. Yes. Thank you, Neeraj ji, so much. Thank you. Rajesh ji, you can unmute yourself and ask a question. I think this is the last question. Yeah. कैश पेमेंट और रिसिप्ट की जो एंट्रीज करेंगे, कभी 3 तारीख को करते हैं, कभी 6 तारीख को करते हैं, 2 महीने बाद करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और आगे मतलब पर्टिकुलर ऑडिट के समय इसको किस तरह से देखा जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है. वो डिलेड अकाउंटिंग करते हैं ना राजेश जी. हाँ. उसका वो सबका इम्पैक्ट है वो. तो हर एक कंपनी, बल्कि कंपनी क्या कहूंगा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से करता ही है. तो तो उसका ऑडिट ट्रेल में आएगा जरूर कि ये एंट्री 15 दिन बाद रिकॉर्ड हुई, ये एंट्री 2 महीने बाद रिकॉर्ड हुई. सो एज एन ऑडिटर जाके पूछेगा भाई ये एंट्री बाद में क्यों पास करी. बस लीगल एस्पेक्ट इसका इतना सही है. एंड इफ द आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, then it might result in some adverse opinion in audit report, be it in the form of qualification or be it in the form of कुछ भी आपके पास कोई भी अदर मेटा पैराग्राफ हो गया, एम्फेसिस मेटा पैराग्राफ हो गया, ऐसे 705 706 का यूज हो गया. और इनकम टैक्स में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा रेट के टाइम. इनकम टैक्स में, सॉरी, इनकम टैक्स रेट या वो डाटा जब लेके जाएंगे उस समय तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. Sir, till now, the fortunate part is that this aspect is not being made applicable in Income Tax Act as well as GST. ठीक. Okay. So I think we're done with all the questions. Madam, there are some questions on chat box again. Plus, okay, I have shared. A lot of questions. Yeah. I have shared my PPT on chat box also. Okay. The PPT has been shared at the chat box. Otherwise, it will be mailed through CIRC to all the members of CIRC. And the same, this recording of the session will also be available on the YouTube. So you people can go through it again if you want. And Ankit ji has shared his number and email address also. You can also ask, send your queries on mail or on messages. Shall we go forward with the chat box question or shall we end the session? We should go forward, I think. Acha. Nitin ji? Yes, sir. Then.
we should go forward. Actually, a lot of people have got queries that what things can be done in Tally. So if the participants, there are like a lot of participants whose clients are doing work on Tally, then we can arrange a session from the Tally person, a half-an-hour session where he can explain you how to go about in the Tally to maintain that audit trail and what will be the repercussions later on. So, Madam, we have got a Tally expert in this session right now also. okay, okay, Rajesh ji is there. Rajesh ji was asking the questions. Acha, Rajesh Maheshwari. Okay. हाँ. Okay. That's nice. राजेश जी, आप इस पे 2-4-5 मिनट बोलना चाहेंगे? टैली के अंदर आपने जैसा बीच में अभी बात हो रहा था कि कोई जना कंपनी का भी करता है, कोई प्रोप्राइटरशिप का भी करता है, कोई पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग करते हैं, सेम कंप्यूटर या अकाउंटेंट, तो उनके लिए टैली के अंदर 2 तरह के ऑप्शन आएंगे। टैली ऑडिट लॉग EL करके आएगा और एक नॉर्मल जो टैली प्राइम है वो रहेगा। तो आपको एक ही लाइसेंस के ऊपर दोनों इंस्टॉल कर सकते हो आप। तो आपको एडिट लॉग में चलेगा कंपनीज का अकाउंटिंग और बाकी नॉर्मल जो टैली प्राइम है उसके ऊपर आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप किसी की भी अकाउंटिंग कर सकते हो। Thank you so much, Rajesh ji. I think there are kind of duplicate questions only which are coming as it is applicable on companies or on trust and other organizations. So you have made it quite clear in the beginning only that it is applicable to private limited company and not trusts, proprietorship or partnership firms. All kind of companies. Yeah. An internal auditor is liable for audit trail in his or her report? I believe or is it yes. only applicable for statutory audit? No. I believe yes, because internal financial controls are being affected in case audit trail is not there. So it brings about a lot of possibilities of fraud as per SA 240 also. So I think it will be applicable at the time of internal auditing as well. One thing more which I would like to ask, that you said we have to qualify the report if there is like any edit logs or if there is a change of entries. Will it be applicable according to the materiality concept, or No. we have to like qualify? Madam. I didn't say that we will have to qualify in case there is any editing done. Okay. I said we have to qualify in case edit log is not being maintained throughout the year. It's not enabled, that means. It's not enabled throughout the year. So if there is any data entry change or something like that, which we go through, so do we need to report that if it is material? See, in case you find any important adjustment entry or you find any amendment or alteration or modification done in any entry through edit log, then you are duty bound to know the reasons that why this entry has been passed, why this change has been done. And in case satisfactory answers are not being offered to you, then I believe in case the transaction or the whole change is significant enough, so it impacts the materiality also, then you should qualify the same. Okay, thank you. Some questions on chat box also. Yeah, that is only I'm going through. So if they're repeated questions, I'm just not repeating them. So if the audit trail is implemented later in the year, shall we report it in the audit report? Yeah, I believe we should report. Okay. Yeah, that's it, I think. Most of the time, chartered accountants and their articles also change the entries. What will be the impact now?
Sir, now in this, I don't think so. They would be having the login ID password to change the accounting entry, sir. और वैसे वो करना एलिजिबल भी नहीं थे सर, आज तक भी नहीं करना था उनको. Okay. In case a chartered accountant who is acting as an auditor, in case वो accounting में खुद involve हो जाता है, then he is disqualified to act as an auditor by virtue of section 144 of Companies Act. Any more questions, or shall we wind up? I think we should end the session. Nitin ji, Vice Chairman CIRC, are you there? Yes, ma'am. We are not able to see you, Nitin ji. Yeah, ma'am. Of course. Okay. That's okay. I am there. Okay, Are we are you not listening? able to see you. Yeah, I'm able to listen to you, but video now it is there. Yeah, yeah. So now we will go forward with the vote of thanks to be given by Vice Chairman CIRC, C. Nitin Gupta. Sir, over to Thank you. you, ma'am. Thank you so much. Firstly, thanks to Ankit ji. Have a very wonderful session, Ankit bhai, for giving your all the valuable inputs and on a very relevant topic and much needed topic that is being applicable to all the companies from 1st of April. Thank you so much for your valuable inputs, Ankit ji. And thanks to Manisha Biyani ji for moderating this webinar and holding this webinar in a great manner. And thanks to all of our participants for their valuable time and having a part of this webinar. Thanks to all of you. We will try to keep it in a future, such type of webinar. And all of you are invited for any kind of suggestion. You can give any kind of suggestion if you want to hold any on any topic for expert opinion or for expert webinar. We can organize such a webinar. Thank you so much to all of you. Yeah, thank you once again, everyone. Signing off. Should I close? Thank you for the wonderful opportunity. Thank